हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। बहुत दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, कुछ ऑफिस वर्क में बिजी था तो नहीं, नेवर माइंड, अब हम रेगुलर रहेंगे। डिस्क्रिप्शन से तो आप जान ही गए होंगे व्हाट द वीडियो इज़ ऑल अबाउट। हाँ, मैंने बाइक में कुछ चेंजेस करवाया, कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए, कुछ मेजर नहीं, बट हाँ द बाइक इज़ लुकिंग रियली ऑसम, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए बाइक देखते हैं। So this is how the bike looks now. The first change that I've made is काफ़ी visible होगा. I've removed the mirrors, company provided mirrors, and used these generic mirrors which I've got from Flipkart for around 300 to 400 rupees, not much. The second change that I've made is I've installed this lever guard. ये मैंने लैमिंगटन रोड से ख़रीदा है. You can buy it for around 500 to 600 rupees or maybe less. ये तो काफ़ी जेनरिक है. You can get more better options than this. ये मिरर और लीवर गार्ड इंस्टॉल करने के बाद बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है. आप पूछोगे इससे क्या फ़र्क पड़ा है, तो आई वुड से इज़ दैट यू नो का बाइक आगे से काफ़ी लेस बल्की लगती है. इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस बिकॉज पहले का जो लीवर गार्ड था वो काफ़ी बड़ा था. नेक्स्ट चेंज जो हमने करवाया वो है आई हैव एडेड दिस रिंग्स टू द रिम्स. थोड़ा रेट्रो लुक देती है, मगर बिलीव मी व्हेन द बाइक इज़ इन मोशन बहुत ही अच्छी दिखती है बाइक. इट्स रियली स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड.
और नेक्स्ट चेंज जो मैंने करवाया जो काफ़ी विजिबल होगा वो है द रियर एंड। रियर एंड में मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है, तो रियर एंड से बाइक बहुत ही ज़्यादा औसम दिख रही है और इसके वजह से काफ़ी अटेंशन पुल कर रही है बाइक। मैंने ये चेंजेस कुछ दिन पहले ही करवाया है। सिंस राइडिंग इट इन द क्राउड एंड और बहुत ही ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करे बिकॉज इट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बाइक्स और बहुत ही अच्छे पब्लिक रिएक्शंस मिलते हैं। फर्स्ट आई हैव रिमूव द रियल ग्रैब रेल्स जो विजिबल होगा, और इंटरनेशनल मार्केट में बाइक ऐसे ही आते हैं विदाउट द ग्रैब रेल्स। उसके बाद आई हैव इंस्टॉल्ड द टेल टाइडी। काफ़ी इंक्वायरीज आए मुझे इस बारे में। ये मैंने ख़रीदा है अली एक्सप्रेस से, बट आई वुड रिकमेंड एनी ऑफ यू इफ़ यू वांट टू गेट अ टेल टाइडी इंस्टॉल्ड टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 और 3 वीक्स। मेरे पास एक दूसरा टेल टाइडी आने वाला है जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट में होगा, सिमिलर टू दिस। So if you still want to go ahead and buy this, you can buy it from AliExpress. Change that I have made is remove the tire hugger. I have removed the tire hugger which gives the bike a completely naked look. I'm a big fan of Kawasaki Z800. I wanted to give my bike a similar look. The next change that I have made is I have removed the pillion seat foot pegs. इसके वजह से काफ़ी जगह फ्री हो चुकी है पीछे से और it looks very cool. At least I feel so. So हाँ, मैंने बहुत लोगों ने बोला कि it would eliminate the rear seat. पीछे कोई बैठ नहीं पाएगा। हाँ, एनीवेज आई राइड सोलो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। टू रिमूव द पिलियन सीट फुट पैक वी हैड टू गिव अ सपोर्ट टू द एग्जॉस्ट फॉर विच आई हैव मेड दिस पार्ट। थोड़ा गंदा दिख रहा है लेकिन दिस इज टेम्परेरी, आई विल बी मेकिंग अनदर वन। इफ एनीबडी हैज़ एनी आइडिया और वांट्स सम आइडिया रिगार्डिंग दिस कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो हाँ, दिस इज ऑल द चेंजेस आई हैव मेड, डिफरेंट लुक। Let me know if you have liked it, not liked it, what changes would you suggest, and this is definitely project in progress. This is not, and we'll be doing more changes to the bike in few days too. Wrapping is an option, not right now because अभी फ़िलहाल bike सिर्फ 7 to 8 months old है and it's pretty fresh. I'm not bored of the color yet. So हाँ, definitely I was thinking about wrapping this one black. Let's see. I would just give it a second thought about करना है कि नहीं करना है. And yeah, that's pretty much up. Let me know how you have liked the video, like the changes that I have made. Any suggestions that you would like from me or you would want to forward me, do let me know. Yes, so do like and subscribe the channel as we'll be coming up with more products for this bike and also other bikes, and we'll be going for short rides. Do like the video if you have liked what the changes I have made, and subscribe to the channel and also share it with your friends who have similar bike. So yeah, until next time, see you all. Bye bye.